over the tragedy in Amarnath Yatra as well. Remember, we have been tracking as to what's really happening on the ground when it comes to the ramification of this cloudburst that had been reported, and now we were learning that at least 40 people had still been missing and they were being looked at by the rescue operation teams that were on the ground there with the NDRF and the Indian Army carrying out these rescue operations of the pilgrims that had been stranded there. Let's first up listen in as to what Farooq Abdullah had to say about this probe that he's demanding on the Amarnath tragedy. इसका बयान दिया है कि जो अमरनाथ जी यात्रा में जो एक दर्दनाक वाक़ा हुआ है वो हम सब के लिए बहुत दुख का वाक़ा है और हम उम्मीद करेंगे, जैसे यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा, कि सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे, ख़तरनाक इलाका है, और साफ चीज़ें लोगों के सामने लाएंगे। और साथ साथ जो गुजर गए हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, उनके ख़ानदानों को, और आगे के लिए भी सोचा जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब नेचर के साथ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन आपको लगता है जिस हिसाब से वहाँ डैमेज हुई है, द क्वेश्चन इज, जहाँ पे ये लगाया गया है, आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी। ये पहली दफ़ा है। तो जबकि इन लोगों को वो जगहें, पंचतरनी इतना अच्छा इलाका है, वहाँ कोई चीज़ कर नहीं सकती थी। तो सदियों से पंचतरनी चल रहा था। तो मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है, उसको आगे से ठीक करें। और इस वक्त तो दुख का माहौल है और हम सब जितने भी यहाँ साथी हैं सब इस दुख में उन लोगों के साथ हैं जिनके लोग मारे गए यहाँ पे। Well, there we heard, in fact, the reaction coming in from Farooq Abdullah, also talking about the rescue operations that are being carried out, and of course the kind of teams that are also present on the ground, trying to make sure that they also identify all of the bodies as well that have been recovered, and also the missing persons, the missing pilgrims that are being looked for by the authorities on the ground, that is of the NDRF and the Indian Army that are on the ground carrying out these rescue operations. And we have been learning about the developments that they are also reporting on, because we have seen how yesterday as well it was a difficult terrain and heavy rainfall, because of which it had become even more difficult for them to carry out these rescue operations. Sir, you have just been to the cave. So how is the situation at the Amarnath cave at present? At present, people are still on the rescue operations. It is still going on, and they are trying their best to see if there is any survivor within the massive debris which had come yesterday, as you know. So how many casualties and how many injured people were treated? Yesterday, total 85 casualties were treated between the army, medical establishment as well as civil establishments there at Holy Cave. Sir, do you expect that more injuries, because many people are still missing? Yeah, we are expecting if we find anyone, and their numbers may increase. But so far today till now there is nobody been reported there to the medical death. Sir, how many? What is the list? What about the figures that has come from the board? They have the registration of the yatris. How many of them are missing actually? I will not be able to. I am not privy to this list of that. I am a medical person. And I just went to see the readiness of the medical establishments and how they are doing. Do they need any help? I have gone in that context. Sir, are all the people being treated there, or you are shifting some to here and then to Srinagar? Many of them have been shifted to down below. Many of them have been shifted to Panchtarni. Many of them to Baltal. Some of them have been shifted to Srinagar based on the seriousness of the case. Sir, do you see that this operation will take more hours or a few more days? At this time, we can't say. The rescue work is still going on. Maybe the people on ground, they will be able to say better, because I had gone from the medical perspective. So I basically looked into the medical aspect. Sir, are the injuries grave who are being treated? Some of them are grave. Some of them are grave. Many of them are subtle injuries. They have been addressed in our medical detachments there. What kind of grave injuries are there? Head injuries,
bony injuries, thigh bone injuries, many such cases were there. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Well, there you heard it, viewers. Our correspondent Zenith on the ground getting us all the voices, the important voices of the authorities also who are carrying out these rescue operations, who are describing in detail as to how the entire terrain is a difficult one to carry out these kind of rescue operations. ऐसी खबर है कि मौसम विभाग ने कहा है कि आगे भी बारिश तेज हो सकती है और ऐसे में अगर बारिश तेज होती है तो चॉपर्स फ्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है उस सिनेरियो में। बीइंग अ पायलट, क्या क्या आपके सामने चुनौतियां आ रही हैं रेस्क्यू करते वक्त जब आप वहां जा रहे हैं? तो सर ये तो हमारे जो सीनियर पायलट हैं वो बताएंगे। बाकी बारिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है चलाने में, लैंडिंग में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ये बड़ा एयरक्राफ्ट है और वह हेलीपैड काफ़ी छोटा है, तो इसलिए दिक्कत होती है सर। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। सर मुझे ये बताइए, MI-17 सर, एक मिनट सर, आइए इधर MI-17 बहुत हैवी एयरक्राफ्ट है, डबल इंजन है, जिस एरिया में हादसा हुआ है तो क्या खासियत है MI-17 की? सर आप तो इसकी टेक्निकल लीड हैं, आप मुझे बताइए क्या खासियत है और क्यों इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है रेस्क्यू के लिए? ये एक बहुत ही मल्टी फंक्शनल एयरक्राफ्ट है। ये 13 टन तक पेलोड कैरी कर सकता है, 4 टन तक एक्सटर्नल पेलोड कैरी कर सकता है और 6,000 मीटर तक फ्लाई कर सकता है। इसलिए ये ऐसे हिली एरियाज में और ऐसे ऑपरेशंस में काफ़ी कारगर एयरक्राफ्ट है ये। सर अभी मौसम ठीक नहीं है तो इस चॉपर को MI-17 को फ्लाई करने में क्या क्या टेक्निकलिटीज़ का आप लोग ख्याल रख रहे हैं? और अगर बारिश तेज़ हो जाती है तो क्या उस बारिश में भी, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं ऊपर, क्या उस बारिश में, उस वेदर कंडीशन में भी आप रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे? जी बिल्कुल। अगर जो है ज़्यादा मौसम ख़राब होता है तब इसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये MI-17 1V एयरक्राफ्ट है, इसमें वेदर रडार नहीं है। हमारे पास जो सेकंड अपग्रेडेड वर्जन है एयरक्राफ्ट का MI-17 V5, उसमें वेदर रडार होने की वजह से वो हिली एरियाज़ में और ख़राब वेदर में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल ड्रॉबैक्स हैं, इस वजह से इसको अभी हम एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं कर सकते अगर ज़्यादा मौसम ख़राब होता है तब। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम खराब होने पे रेस्क्यू नहीं, ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। कुल 8 बॉडीज अभी सर सुबह लाई गई हैं और अभी क्या SOPs हैं, क्या आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि कब तक ऑपरेशन चलेगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो टेक्निकली अभी बहुत आपके लिए चैलेंजिंग हैं? अभी हमें फ़िलहाल स्टैंड बाई पे रहने के लिए बोला गया है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 3 बजे के बाद फ्लाई फिर से करेंगे। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इंजर्ड को या फिर इफ़ एनी मॉडल रिमेंस उन्हें भी वापस लेके आया जाएगा। तो जैसा आप सुन रहे हैं कि टेक्निकल लीड है, अभी तुरंत एक और अधिकारी हैं सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। अभी जिस तरह से ऑपरेशन BSF चला रहा है, 8 बॉडीज को लेके आए हैं आप लोग और कल शाम से ही लगातार आप मॉनिटर कर रहा है BSF इन चीजों को। अभी ऑपरेशन को लेकर सर क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरह से आगे बढ़ना है? देखिए सर, अभी तक जो कल के हादसे के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम आज सुबह से हम स्टैंड बाय पर थे और फर्स्ट लाइट पर हमें यहाँ पर टेक ऑफ का हमें प्रिपरेशन मिल गया था। तो जैसे ही हमें आदेश मिला गया, हम यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग टेक ऑफ किए और 8 कैजुअलिटीज़ जो हुई थी वो हम लेकर आए हैं सर, और कुछ बाकी जो कैजुअलिटीज़ थी सर वो एयरफोर्स लेकर आया है। और अभी हमें नेक्स्ट आदेश मिला हुआ है कि अभी कुछ देर बाद दोबारा फिर टेक ऑफ हो सकता है यहाँ पर। तो हम आज सुबह 5 बजे से हम यहाँ पर स्टैंड बाय पर बैठे हुए हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए। हमारे सीनियर अधिकारियों ने जब हमें बताया गया कि जो ऐसे कल शाम को हादसा हुआ है, तो हम उस टाइम से इस जहाज़ की तैयारी करने में लगे हुए थे। तो ये हम इस चीज़ के लिए हम हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं। कभी भी कोई कैजीवैक या मेडिवैक जब भी हमारे पास यहाँ पर आता है तो हम इस चीज़ के लिए, इस जहाज़ को हम प्रिपेयर उसी चीज़ के लिए हम रखते हैं हम यहाँ पर। ये सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है देश का और सबसे पहले आप ही मोर्चा लेते हैं, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज हो, चाहे दुश्मनों से दो हाथ करना हो। इस हेलीकॉप्टर के बारे में अगर सर बात करें टेक्निकल की, कितना एडवांस ये डिवाइस, ये मशीन है आपकी MI-17 और किन किन कंडीशंस में आप इनको फ्लाई करते हैं? देखिए, ये हेलीकॉप्टर जो हमारा एक बहुत ही रोबस्ट हेलीकॉप्टर है, रशियन हेलीकॉप्टर है। और ये हेलीकॉप्टर हमारा किसी भी रेनफॉल हो या फिर हमारे लाइट स्नो हो उसमें भी हम फ्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सर इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, मतलब हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर होने की वजह से हम इसमें लगभग 15 से 20 लोगों को एट अ टाइम हम लेके आ सकते हैं। हमारी आंखों के सामने की बात है, हम लोग का दिल ही जानता है। हम लोग को ये भगवान लोग ने जिस तरीके से हमारे आदमी हम लोग को बचाए हैं, प्रभु ही सबकी रक्षा करे। इंडियन आर्मी है तो हम हैं, ना हो तो सर हम लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं।
Well, that was an emotional appeal that we have heard of some of the pilgrims also talking about expressing their gratitude to the Indian Army, calling them Devdoots, and also saying that this is the Indian Army that is on the ground because of which their lives had been saved as well. And that really, viewers, gives us an inclination of the kind of seriousness of the situation on the ground and the kind of deployment of the officials as well that has been done to make sure that the rescue operations are being carried out swiftly and more names do not add to that unfortunate list of people who have lost their lives. Zeenat, my colleague, also continues to report for us on the ground. Zeenat is joining us on the broadcast. Zeenat, tell us more about what is happening there on the ground right now. We heard your conversation with several of the officials saying that this is a difficult terrain and also because of the rain, it is proving to be more difficult to carry out the rescue operations. Tell us the latest. See, as of now, the 120 kg relief material has gone to the cave where the people who are still trapped, they are being supplied the relief material, because that is the request that has come from the district administration to the army, and now army has provided the relief material of around 120 kg. As far as the injuries that are being treated since yesterday, the toll is of 85, and most of the injuries are either limb injury, the thigh injury, the bone injury, or the fracture in the neck or the head injury. That is what the doctor posted at the ADS said, that these kind of injuries are there and they are the critical injuries. People are being treated at the multiple location, be it the hospital at near the cave, Panchtarni, then you have the base hospital, you have the ADS, then you have the Ganderbal hospital, then finally those who need advanced treatment, they are being shifted to the tertiary care hospital in Srinagar, Sikkim, Sher Kashmir Institute of Medical Sciences. We are seeing the coordination between the forces, because early morning we also witnessed the VVIP movement coming from the GOC 15 Corps, similarly IGP Kashmir, and also GOC Kilo Force, whose boys are also the part of the operation. They all have been at the cave and they were the part of the rescue and were reviewing the situation on ground. We are seeing the rescue operation still going on, as the terrain is quite difficult. It is going to take much more time, because the debris in which they are trying to find out either the injured or the dead bodies, it will take a debris clearing is going to take a much more time. And as far as the weather alert is concerned, although the Met has said there is a possibility of shooting stones along the access of Pahalgam as well as Baltal, and that is why the administration has also suspended the yatra for till further notice. The roads have turned, the tracks have turned quite slippery. That is also the reason that why it is taking long for the rescue operations. Right, absolutely. Zeenat there on the ground getting us all the updates as far as the rescue operations are concerned, and the authorities also saying that they are leaving no stone unturned to find all of these missing pilgrims as well. Zeenat, thank you for joining us on the broadcast with those details.